This conference will now be recorded. Now the topic is IAM, Identity and Access Management. So IAM है क्या guys? The IAM, the other word is IAM is a control panel of cloud. IAM is a control panel of cloud. The IAM provides a control panel. Control panel का मतलब है guys कि you can manage. IAM आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. लाइक कंट्रोल पैनल का मतलब है with the help of IAM apply cloud access policy to specific user. तो गाइस आईएएम के थ्रू हम क्या कराते हैं, हम पॉलिसीज डिफाइन करते हैं. पॉलिसीज का मतलब है कि देयर इज एन नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल इन अ क्लाउड. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक EC2 सर्विस हम लोगों ने पढ़ी थी, वीपीसी हमने पढ़ा था, S3 स्टोरेज पढ़ा था, EFS पढ़ा था, SQL हमने पढ़ा था. ठीक है, देन डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हमने पढ़ी थी. लाइक दिस इज अ वन पॉइंट लाइक EC2. Second is like a load balancer. Then third is like VPC. Fourth is look like S3 storage, and like RDS, EFS. जो भी सर्विसेज हम लोगों ने पढ़ी हैं, these are the services. अब होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट जब आप अपने अकाउंट से लॉगिन होते हैं ना, तो यू आर लॉगिन विद रूट यूजर. तो बाय डिफॉल्ट द रूट यूजर हैव एक्सेस टू ऑल सर्विसेज. कि हमारा एक होता है रूट यूजर. रूट यूजर के पास क्या होता है कि हमारे पास ऑल सर्विसेज का एक्सेस होता है. द रूट यूजर all cloud services by default. बाय डिफॉल्ट रूट यूजर क्या करता है, क्लाउड की सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है. लेकिन अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, कि जब आप क्लाउड पे ज्वाइन करते हो, आप कोई भी जॉब ज्वाइन वगैरह करेंगे, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है कस्टमाइज का. कस्टमाइज का मतलब देयर द 3 यूजर्स इज अवेलेबल. लाइक मैं कहता हूं कि मेरे 3 यूजर्स हैं. वन यूजर नेम इज ललित, सेकंड इज लाइक विकास, एंड थर्ड लाइक दिग्विजय. देयर द 3 यूजर्स इज अवेलेबल. नाउ कि मैं चाहता हूं कि आई एम जस्ट क्रिएट अ 3 यूजर्स. So like I'm create a one user with Lalit. Second user is look like Vikas, and third is look like Vivek. I am define कि मैं चाहता हूं कि मैं policies define करना चाहता हूं as per the requirement of as per the my company norm. The Lalit can access work only on EC2. Vikas access on VPC, and Vivek access on S3. The any other service is denied automatically. यानी कि मैं एक वर्क प्रोफाइल हूं कि like if any user join as a cloud administrator or as a cloud admin or cloud user, so which profile you can allocate, which will service use accessed by the user. There's a simple concern है कि guys this is a control panel. With the help of IAM apply the cloud access policy to a specific user. कि आप किस यूजर्स को क्या वर्क डिफाइन करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम सेटिंग करते हैं क्लाउड के IAM पोर्टल से. गॉट इट द शॉर्टकट में गाइस, कॉन्सेप्ट समझे गाइस? गॉट इट द यूज ऑफ Yes, IAM? sir. Yes, sir. नाउ द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर हमारे कुछ पैरामीटर्स आते हैं. अगर मैं बात करता हूं IAM पैरामीटर्स, तो IAM के अंदर पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो गाइस सम बेसिक पैरामीटर्स आते हैं.
पहला पैरामीटर्स आता है पॉलिसी, लाइक यू क्रिएट अ पॉलिसी. Like I'm create a policy with the name of EC2 full access. मैंने यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट करी with the name of EC2 full access. Now I'm just create a one more policy. So this is my policy 1 and this is my policy 2 and मैं second policy यहाँ पे create कर रहा हूँ guys, S3 full access. So now I'm just create two policies. The one policy is called S3 full access. Now the second policy is create a EC2 full access. After that, I'm just create a 3 users. I'm create 3 users like user 1, second is user 2, and third is user 3. Now between this, if I'm just attach the attach policy, so guys when you attach a policy there's a two way कि अगर आपको policies attach करनी है, so like I'm just attach this policy, like I'm just create a policy 1. If I'm just create a policy 1, now I'm attach the policy 1 with user 1, and now I'm just attach policy 2 is user 3, and now I'm just attach policy so guys I'm created this policy. What happened? कोई बताएगा क्या आउटपुट आएगा? Anyone? वैभव, विकास, कोई बताएगा? और यूजर 2 से दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, बट यूजर 1 के पास एक ही एक्सेस है और यूजर 3 के पास भी एक ही एक्सेस है. क्योंकि यूजर 1 से अगर आप लॉग इन होंगे तो यूजर 1 सिर्फ क्या काम कर पाएगा? EC2 से रिलेटेड, EC2 फुल एक्सेस, और यूजर 3 ओनली स्टोरेज से रिलेटेड. बट यूजर 2 इज वर्क EC2 और S3 फुल एक्सेस. दोनों ही पॉलिसीज मैंने डिफाइन कर दी, यानी कि यूजर 2 के पास EC2 को भी मैनेज करने के राइट्स हैं और S3 स्टोरेज को भी S3 मैनेज full करने access के है. राइट्स हैं. Yes. Got it, guys? So now I'm जी. just create a user and create a two policies. So how to create users and how to create policies? Simply, I'm just log in with portal. I'm logged in with portal. XW, what happened? Is it AMSX? No, P4. And now give the password. Give me a minute, guys. So guys, that I'm just search in IAM.
and now I'm just create a user or either create a policy. So I'm first of all I'm just create a policy, select the policies and now create policy. And choose a service. I'm create a policy with the name of EC2. Select the service EC2 and I'm just give the rights. So I'm just give the all policies, then click resources. तो डिटेल में मैं आपको कल इसके बारे में बताऊंगा सारी चीजें वन बाय वन. अगेन all resources. Now next and give the name is like full access EC2 hyphen P1. तो मैंने पॉलिसी का नाम दे दिया full access EC2 hyphen P1. that is the policy one. You can just give the any name. Same as I'm just create a one more policy. So I'm create another policy, create a policy. At this time, just create a policy for like storage account. Select a service, जिस service के लिए आप policy बनाना चाहते हो. Now I'm just create a policy for S3 storage. So I'm just searching S3. Now select the all policies of S3 related to this. Read से related 52 policies हैं, tagging से related 10 policies हैं, write से related 41 policies हैं, list से related 10 policies available. अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो एक्सपेंड ऑल कर लीजिए. सो नाउ दिस इज अ पॉलिसीज. आप जो भी कस्टमाइज पॉलिसीज अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप वो पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं रिलेटेड टू. आप उसी से ही क्लिक करिए. बट आई एम सेलेक्ट ऑल. Now the select the all resources because I'm select all resources. So now I'm just click on all resources. Then next review and give the policy name like full hyphen ACCS access hyphen S3 P2 and now create policy. Got it guys? This point how to create policy, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Everyone got it the point? Yes, sir. Now कि मैंने अभी क्या बनाई है policies है, but I'm just create a users and now attach policy with a user. So now I'm just created 3 users. So guys, when you create a user, there are 2 types of user, 3 types of access is available in a user. कि या तो आप अपने यूजर को CLI एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हो कि आपका यूजर सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे ही काम करे, या सेकंड आप अपने यूजर को एक्सेस दे सकते हो. योर यूजर आर लॉग इन विद द CLI एंड GUI. तो CLI प्लस GUI बहुत एक्सेसेस आप दे सकते हो अपने यूजर्स को, या आप ओनली GUI एक्सेस भी दे सकते हो. सो डिपेंड्स ऑन यू कि आपका जो यूजर है ग्राफिकली काम करे या लिनक्स बेस्ड है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करे, या CLI प्लस GUI है तो किस बेस पे आपका यूजर वर्क करे. So now I'm just create a user कि मैं अपने यूजर को जो क्रिएट करना चाहता हूं. I'm just provide the access of CLI and GUI. So how to create a user? I'm just go to the IAM. You can see the option is available, the users, and already admin user is available. I'm delete this user. And now click on add user. Give the username is user user1, user2, user3. I'm created 3 user. If you can select this one access key, that means this is only for CLI. Or when you select this only, this is for console access. But if you can select a both, that means this is your both CLI and GUI. So I'm just put the password of GUI ASD at 1234. Now this is the option, the required password reset.
So this is meaning कि if your user is login in a first time, आपका यूजर जो फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा, देन द यूजर रिसीव द कंसोल फॉर चेंज पासवर्ड, यूजर के पास ऑप्शंस आए कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सके. So अगर आप इसको अनचेक कर देंगे, देयर इज नो एनी ऑप्शंस कम्स व्हेन यूजर इज लॉगिन फर्स्ट टाइम. So मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, द यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एज अ नेक्स्ट साइन इन. नाउ द नेक्स्ट, this is the option of permissions. I'm not give the any permissions. मैं policies already बना चुका हूँ. तो अगर आपको policy attach करने हैं, तो when you create a user, then you attach the policies with the user, and these are the default policies are created by the AWS cloud. But I'm not using a default policies. I'm using जो मैंने अपने according policies create करी हैं. I'm using my policies जो हमने create करी हैं guys. So full hyphen access, these two policies I'm deploy, but I'm not select any policies right now. I'm just click on a next, and create user. So guys, this is the way the how to create policy and how to create user. Is it done? Everyone. Yes, sir. Now Yes, sir. the next option, how to log in with user. कि आपको user से login कैसे करना है. So guys, remember when you log in a user, you can just set the alias name. Alias names ki when you log in with user, you require the two types of credentials. Either you need a account ID, but I'm not share the account ID with everyone. Though I'm just using a nickname of my account ID. So I'm just nickname is my account name is ICCP info. So I'm just set the my nickname ICCP info. This is the alias name. So this is my ICCP info is the alias name, and now I'm just create three users, is user 1 and user 2 and user 3. I'm not create any group, and there's a no any permission is allocated. I'm not attach any multi-factor authentication. So now I'm just create a separate normal user. Now how to log in with this user is simply I'm just log in a portal to another browser, is I'm open incognito window and then click on Amazon Web Services. Now when you just go for this web page, you can see there the two option is available. One is root. So now you can log in right now in a root user. आप सभी अभी root user से login होते हैं, तो you can select a root. But when you log in with the IAM, you can select the IAM user. Got it everyone? So अगर मेरे को user से login होना है, तो we have select this option, IAM user, and now you can either set a account ID, or either you can just give the alias name. So I'm just create a alias ICCP info. So I'm just set my the alias ID is ICCP info, and then click on next. It's asked me the username and password. So my username is, Repeat once again. When we select root user and when we select IAM user. the IAM user is simply the root user is the admin user. Got it? But IAM user is created by the admin, because if like you join my company and I am an admin, that is the I am a root. So if you are join, I'm just you join my storage department. So I'm just give you the storage rights. So I'm create a one user with your name is Sivam Kumar, and I'm just attach the policy of storage policy. I'm attached with your user. So how to you can access your storage account? So it's simply you can just go to the portal and then select the IAM user, give the my alias ID is my domain is. Got it, Sivam? Everyone got it the point? जी Now sir. then click on a next, give the user one, and the password I'm already set the password is ASD at 1234, and now click sign in. Guys, when you sign in, we have provide the one policy, the user change the password in a next login. So now I'm just set the ASD at 1234 is my first password, and now I'm just update my new password. And now confirm password. Oh, wait. What happened?
गाइस पासवर्ड क्या ऐड ऑन करा था मैंने? The old password is does not match. What happened? ASD 1234, and now the new password is क्या हुआ यार? पासवर्ड चेंज. So info user one, the password is why? सो गाइस मैं खुद ही पासवर्ड भूल गया क्या लिखा था, तो मैं यहाँ पे यूजर 2 को लॉगिन कर लेता हूँ. ठीक है, एंड पासवर्ड इज ASD@1234 एंड नाउ क्लिक साइन इन. अगेन चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आया. आई एम जस्ट पुट द ओल्ड पासवर्ड ASD@1234 and I put the new password is QWE@12345 and QWE@12345 and now the change password. तो आई थिंक सो गाइस पासवर्ड चेंज हो गया, लेकिन पासवर्ड चेंज होने के बाद ये लॉगिन होना चाहिए था. सो आई एम जस्ट बैक इज ICCP info and USER user 2 and password is, and now sign in. Your authentication information incorrect, please try again. What happened here? ये पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है भाई. क्या पासवर्ड लेगा ये? Sign in AWS or change password settings. What happened? चलिए एनीवेज मैं गाइस इसको क्लोज कर रहा हूँ. आई एम जस्ट ओपन टू अनदर ब्राउजर. मैं माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर पे ओपन कर रहा हूँ. लॉगिन विद AWS लॉगिन. नाउ Amazon console. Now the alias name is ICCP info. IAM user is USER user 2 and the password is ASD@1234. Now the old password ASD@1234 and the new password is ABC@1234. So guys, this is a new password and now confirm password. So wait, got it. So पासवर्ड चेंज ऑप्शन ले क्यों नहीं रहा है भाई? इन्फो गाइस, आप में से अपने पास से कोई देना, मेरे एंड पे शायद नेट की प्रॉब्लम है. कोई है सिस्टम पे लॉगिन आप में से? नहीं सर, मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है तो। कोई है गाइस सिस्टम पे कोई लॉगिन है? पर मैं एक बार चेक करता हूँ. आप लोग ट्राई करिए. यूजर 3 को कोई करिए.
Yeah, otherwise I'm सर just ICCP इन्फो है या ICCO इन्फो है? यार ICCP info ही है, ICCP info ही है। Now I'm just go to user 1 और मैं इसका पासवर्ड ही चेंज कर देता हूँ यहाँ से। वेट, now the click on the custom password is INDIA India at 1234 and now apply. So login profile for user 1 cannot be modified when the login profile is begin create. लॉगिन क्यों नहीं हो रहा गाइस? आप ट्राई करेंगे अपने एंड पे? सर आप यहाँ ICCO लिखे हैं। सॉरी 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 सॉरी, ICCP info user 2 और ABC at 1234। ये ICCP info को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा यार। ASD at 1234। गाइस मेरे एंड पे ना पासवर्ड प्रोसेस हो नहीं रहा है, तो मैं सर इसलिए मेरे आप एंड पे लोगों भी से यही शो कर रहा है। ये ऑप्शन, ये वाली विंडो आ रही है। जी सर वो वाली आ रही है, इसके बाद वाला प्रोसेस नहीं हो रहा। तो गाइस कुछ चैलेंज है, ठीक है ना, वरना अदरवाइज पासवर्ड आपका यहाँ से चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हम जस्ट क्रिएट अनदर यूजर, ठीक है, हम क्रिएट वन मोर यूजर इज यूजर 4 और मैं पासवर्ड चेंज वाला ऑप्शन अभी फिलहाल हटा दे रहा हूँ। तो हम जस्ट क्लिक ऑन यूजर, ऐड यूजर and I'm create a new one with the name is I'm India. I'm just create a user with like a India and I'm just give the console access user and custom password is ASD at 1234 and now the next review and create. Now guys, I'm just login with this user and simply I'm just open an incognito window and login with AWS portal. Select the IAM and the ICCP info is my alias. And now I'm just give the username is INDIA India and the password is ASD at 1234 and now click enter. You can see that I'm just login with this portal user and now there's a no any access because I'm not provide any permission to this user. If you can click on a EC2 dashboard, you can see that everything is denied. Now if you go for like a S3 storage, there's a no permissions. The user create a storage account, so you can see you don't have a permission to list a bucket. Got it guys? Because there's a no any rights is available. You can go for anywhere, you can go for like a VPC. So there's a no any rights because I'm create a user but I'm not provide any permission to a specific user. Got it guys? So you can see there's a no any, all services denied. Now I'm just provide a permission. So how to attach a policy? I'm already created one policy and now I'm attach policy with this India user is simply I'm just go to the user property. I'm just click on IAM section and then click on the user and go to the user property. So this is a 4 users are available. Now I'm just click on an India user or inside the India user is simply security credentials. This is the security credentials. I'm just not go for the security credential because if you change a password you can then go to the security credential, but I am attach a policy, so I'm just go to the add permissions and now attach existing policy because I'm already create a policy. That's why I'm just click on attach existing policy and now I'm just create a 2 policies. One is full hyphen, so I'm attach both policies. Now I'm just attach a EC2 and as well as I'm attach a S3. Now I'm attached these 2 policies and now next add permissions, review and create.
So I'm just attached, these two policies are attached with my India user. Now I'm just go in India user portal. Now you can just refresh. So I'm not give the VPC policies. Got it, guys? So if I'm not give the VPC policies, so it's so the retry. So it's create key VPC. Okay, I'm just give the EC2. So EC2 sections के अंदर ही guys मेरा VPC आता है. So that's why it show the VPC. As well as if you go for like a S3 storage, I'm just click on S3 storage, or inside the S3 storage you can see do you have access for S3 storage. Got it? The all options are available. But if you go for like any other service, like you go for the RDS, relational databases, so I'm not give the RDS access, or either EFS access. So each and any other service is denied. Now click on a create database. Got it, the error? Everyone. So depends on you कि आप अपने users को as per the company norm जो भी profile define करना चाहते हो वो policies आप create करिए and then attach policy with user. Got it, guys? Yes, sir. Any question related to this? Jaspreet, कोई question related to this? Guys, any question related to this? नहीं सर अभी तो नहीं है. So this is a simply कि I'm already कि the IAM is a control panel. IAM is a control panel, and with the have a control panel you can define a specific rule or specific policy to a user, and you can define कि your user if you are based on a EC2, or either you go for the storage department, or either you go for the database department, or either you go for the network department of cloud, or either you go for like a virtual infrastructure department. तो उसी के अकॉर्डिंग आपके यूजर्स को राइट्स मिलेंगे, यानी कि आप एक वर्क प्रोफाइल जो डिफाइन करना चाहते हैं वो क्लाउड के थ्रू कर सकते हैं. Got it, guys? So मैंने अभी ज्यादा डिटेल में आपको लेके नहीं गया हूं क्योंकि आज डे 1 है IAM का, बट कल मैं कंप्लीटली डिटेल में आपको लेके जाऊंगा. आज मैंने सिर्फ 2 ही चीज बताए हैं क्योंकि अभी हमारा जो S3 का एक टॉपिक और रह गया है. लाइक मैंने मैप नेटवर्क ड्राइव शायद नहीं बताया था आप लोगों को. एवरीवन गाइस, मैपिंग Yes, sir, करना नहीं. मैंने आपको नहीं बताया था. तो प्लीज कल आप लोग में से एटलीस्ट 2-3 स्टूडेंट्स अपने लैपटॉप पे लॉगिन हो. Okay. ओके सर. Got it? So we have created one storage account and map this storage account with your laptop. तो आपके लैपटॉप से करेंगे, बट उस समय हमें अपने यूजर्स के क्रेडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होगी. लाइक कि अगर मैं S3 स्टोरेज के एक्सेस दे रहा हूँ या किसी चीज के, तो आप अपने लैपटॉप से ही उनको मैनेज कर सकते हो विदाउट पोर्टल पे लॉगिन. सो हाउ टू लॉगिन विद अ CLI यूजर. तो गाइस रिक्वेस्ट है कि जो जो अपने लैपटॉप से लॉगिन होगा मैं उतने ही यूजर यहाँ पे क्रिएट करूंगा और उसी हिसाब से ही मैं प्रोफाइल क्रिएट करूंगा. तो आप देखेंगे जो राइट्स मैं दूंगा वही राइट्स आप लोगों को मिलेंगे काम करने के लिए. राकेश जी, इवेंट ट्रिगरिंग वगैरह का कुछ है क्या इसमें? किस चीज का? जैसे सपोज किसी S3 बकेट पे कोई फाइल हम अपलोड करते हैं, उस इवेंट पे कुछ ट्रिगरिंग वगैरह का, जैसे हम कुछ लैम्डा कॉल सब है, करें आगे कुछ. हम क्लाउड वॉच पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आएगा. ओके. अभी आएगा, अभी टॉपिक आएगा. IAM फिनिश होगा देन फिर क्लाउड वॉच पे मॉनिटर होंगे ना, मॉनिटरिंग पे. ठीक है विवेक जी? तो थैंक यू गाइस. तो आज